Good morning, students. Welcome to Commerce Gyanpit Odisha. Today we'll start with a new chapter, that is limited liability partnership. Among partnership and limited liability partnership, कोड़ा important कहले आमे कहि परिया limited liability partnership is far more important. जदि दीडा comparison रे आ दीडा जदि देखु चले कहले कोड़ा हेले से एते बेसी पचारुनी. ओके, जदि एग्जाम पर्सपेक्टिव रु जहाँ भी पढ़िबार अछि तो आमे जति डिस्कस करछु सेति पढ़ले रेलेवेंट हैला, सेति पढ़ले मोर देन एनफ. आ बेसी टाइम वेस्ट करियानी ए चैप्टर्स ऊपर. आडु भल तुम प्रेफरेंस देव तुम इंडस्ट्रियल लॉ उपरे. इंडस्ट्रियल लॉ रे बहुत इजीली मन रखिया जिंस अछि, जेमति कि हमर फैक्ट्रीज एक्ट रो जीन देले गोटे क्वेश्चन डा कंपलसरीली आसुची, तुम देखि परियो. कोड ऑफ वेजेस टा भी एते खास नै, से बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर टा. इंस्टेड फोकस ऑन देखो फैक्ट्रीज एक्ट अछि, इंश्योरेंस अछि, हमर इंश्योरेंस एक्ट टा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रो प्रोविडेंट फंड टा अछि, ग्रेच्युटी अछि. ऑल दिस थिंग्स कैन बी इजीली रिमेंबर्ड. आ तार गोटे फेवरेट क्वेश्चंस भी थाउची, परमानेंट एम्प्लॉयर, इमीडिएट एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जोड़ा कि से रिपीटेडली पचारची हैला. वी विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर वीडियो बिफोर एग्जाम्स, माने वेरी रिसेंटली गोटे वीडियो आमे रिलीज करू जोड़ा रे कि तमरो ईच इंडिविजुअल टॉपिक रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कोन सेटा डिस्कस हबो अलोंग विथ देयर मीनिंग हैला, ब्रीफ मीनिंग सेटा रे बुझा हबो. फाइन, कमिंग टू दिस चैप्टर, जेति कि मु पढौची सेति कि आगा पढिबो, बेसी आरे इन्वॉल्व हेबा दरकार नै. काहेंगे एलएलपी एक्ट जहाँ भी अच्छी दैट इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ चैप्टर टा सेडा जदि पढ़ी कि जीवो सॉरी मनी केबेल. इवन एन एलएलबी कोर्स जहाँ भी अच्छी सेथिरे मध्ये हमर ए एक्ट रो गोटे पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट अछि. तो जानि पारथिबो केते इलैबोरेटिव वे रे से पचारछि. तो हमको एग्जाम पर्सपेक्टिव रो सीएमए इंटरमीडिएट रे जहाँ एग्जाम रे क्वेश्चन पचारछि सेना हमें खाली डिस्कस कर. फाइन, तो एलएलपी एक्ट रो डेफिनेशन ला कोन देखो. First definition होची LLP Act 2008 defines an LLP as a legal entity that is separate from its partners and has perpetual association. Perpetual association or succession. तो से कौन कहूची, it's completely different from the particular individual. जे भी start करचंदी तांकी आ तांकर जहाँ भी entity से दीड़ा होची totally different. Clear? LLP Act 2008 was passed by the Indian Parliament on December 2nd, 2008. ठीक अच्छी, एडा केबे पास हितला फर्स्ट डिसेंबर 2nd 2008. क्लियर, डिसेंबर 2nd 2008. तमे एलएलपी एक्ट रो बिट क्वेश्चन जगह एक्सपेक्ट करि पारियो, बिट क्वेश्चन से कंपलसरीली पचारछि हैला. तो फर्स्ट होची एलएलपी एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस हेथिला डिसेंबर 2nd 2008. ओके, एलएलपी एक्ट रो बर्थडे आछि हम. तो एलएलपी अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑन July 28, 2021, but it became applicable on April 1, 2022. हैला, नुआ एक्ट केबे आस्थिला हमरो, एक्सक्यूज मी, July 28, 2021 हैला, बट सेटा एप्लीकेबल केबे हैला April 1, 2022. कंफ्यूज हबोनी. एंड केतरा अमेंडमेंट्स हेछि, दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. 29 अमेंडमेंट्स हेगिरी, माने एलएलपी एक्ट 2008 जहाँ भी अच्छी सेडा को से 29 दा चेंजेस करिगिरी एलएलपी न्यू एक्ट से बनेला. क्लियर, एतिकी रेलेवेंट. आ फीचर्स देखो, फीचर्स रे तुमको बिट क्वेश्चंस अधिक आसीबो. तो फीचर्स एमति लिखेछि. फर्स्ट थिंग, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी कांसेप्ट ता नॉट न्यू फॉर यू, आमे ऑलरेडी पढिचु. तार बेसिक मीनिंग कोन गुटे लाइन रे की कहि परियो, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर. वेरी गुड. तो जिनस कौन होची ना, whoever is controlling the business तांके थिले आगा से जिनसडा रहइबो, नले से जिनसडा डिसॉल्व होई जिवो कहि कि हमें कहि परिबानी. सो इट्स कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम इट्स एंटिटी. लिमिटेड लायबिलिटी, पूरा पूरी लायबिलिटी नाय से मानंगर हैला. लिमिटेड लायबिलिटी, दिस इज द की इंपोर्टेंट फीचर. माने पूरा पूरी तांके तांकर प्रॉपर्टीज बिकिगिरी से जिनस ऊपर इन्वेस्ट करिवार किछि भी नेसेसिटी नाही. ओके, देन फ्लेक्सिबिलिटी, केले आसी परियो, केले चेंज करि परियो, केले ऐड करि परियो, केले लेफ्ट हे परियो. व्हाट्सएप ग्रुप वाले हे जेछि ने. एटलीस्ट 2 people are required to start an LLP. दीडा पीपल थिले स्टार्ट हे जिवो. नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पीपल, केत जण हेले मध्ये अपॉइंट हे परिबे, ऐड ऑन हे परिबे. एटलीस्ट 2 partners must be designated and at least 1 partner must be an Indian resident. ओके, गुटे पार्टनर होछि कोन हमर इंडियन रेसिडेंट एटलीस्ट थिबार अछि. आ दीडा पार्टनर कोन पर्टिकुलरली पोजीशन हेल्ड करथिबा पार्टनर्स हेथिबार अछि. एमति नै कि समस्त स्लीपिंग पार्टनर हेबे कि समस्त नॉमिनल पार्टनर हेबे, ओनली प्रॉफिट मेकिंग पे पार्टनर हेबे, एमती हे पारिबो. बुझला, दीडा एटलीस्ट दीडा पार्टनर जे भी अछि से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हेबार निहाती दरकार. फॉर्मिंग एन एलएलपी इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. कोन हमरो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव माने कोन, बेसी किछि खर्च एडारे लागिबोनी.
fewer compliance requirements माने कौन लॉ रे जहाँ भी बहुत लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करिया दरकार बहुत कम रिक्वायरमेंट्स an LLP can continue to operate even if its partners change हेले मध्य LLP डा कौन operate हेई पारिबो आराम से LLP is excluded from tax payment excluded from what tax payment requirement रो कौन करो माने आको exclude करा हिची एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट्स इट एथरे बुझिया जिंस किछि नै नॉर्मली हमर स्टेटमेंट अळे हेगिरि अछि तो एबे देखो पर्पस ऑफ LLP when two or more persons are associated for carrying on a lawful business with a view to earn profit from an LLP by subscribing their names to an incorporation document and registration with ROC तो से कौन कहूची two or more persons at least two persons थिले ही पारियो तो two persons जेतळ को associate हेगिरि किछि जिंस lawfully carry on करिवे को इंटेंशन रे प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन रे तांके कोन करर अछि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रे तांकर ना गुडा को सब्सक्राइब करयार अछि आ कोन करर अछि रजिस्ट्रेशन करयार अछि क्लियर दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ LLP एते जे बुझिना ना कार किछि डाउट अछि पचर पारियो कंफर्म इन द ग्रुप फाइन थैंक यू वॉइस टा क्लियर अछि ना ब्रेक होनी ना ओके टिके टिके होची फाइन क्लियर साउंड फाइन ओके ओके फाइन आई ट्राई टू मैंने एक्सप्लेन टिके स्लोली करी ताकि वॉइस टा जदी ब्रेक होची कहले मते संगे संगे कहले अगेन रिपीट कर देबे नेटवर्क टा स्लो अच्छी फाइन सेडा लाइट देखिलो ग्रीन होची अच्छी ना ओके फाइन नेक्स्ट लेखो heading mutual rights and duties of partners 2 marks question आस्थिला हमरो MTP 2019 mutual rights and duties of partners mutual rights and duties of partners mutual rights and duties of partners mutual rights and sea soil mutual rights and duties of partners wow hectagon ए कौन कथा छ पेन चलनी देबी की एडी केतेटा पेन अछि नै था दरकार नै नै एला दे पारे तमे कोन मते लोण भितर हाउ कैन यू डू दैट मु कहली मु गोटे पेन दान करि पारी बेले तुम मो हाथ रा आगे मागी दो रावण से लंका पूछ रहे आप नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय रावण हैला तो लेखो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स लेखो ना सॉरी लानी वेरी गुड mutual rights and duties of partners mutual rights and duties of partners of an LLP of an LLP of an LLP are those which are mentioned those which are mentioned and agreed upon the LLP agreement
agreed upon the LLP agreement. LLP agreement. Break होची again. देखो बर्तमान किछि बेसी जिंस कहिनी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स ऑफ एन एलएलपी आर दोज व्हिच आर मेंशनड अपॉन फाइन थैंक यू मेंशनड अपॉन द एलएलपी एग्रीमेंट बुझला एतिकी कहिछि मो हां ठीक अछि देन हैला तो तुमरो क्वेश्चन आसुची लाइक म्यूचुअल ड्यूटीज एंड पार्टनर्स जहाँ भी अच्छे ले कहले तमे ए जिंसटा लिखि पारिबो फर्स्ट पॉइंट तमे लिखिबो एडा एबे ए पाखरे माने ए स्पेस ता छाडी गिरी तमे एनी लेखो कि एलएलपी एग्रीमेंट रो मीनिंग कोन एक्चुअली एलएलपी एग्रीमेंट ता अंडरलाइन करो एंड ए पाखरे लेखो एलएलपी एग्रीमेंट हेडिंग दियो एटा तमे देखिबो बहुत थरे से क्वेश्चन पचारथिबो एलएलपी एग्रीमेंट LLP agreement meaning lekho it is a formal it is a formal it is a formal it is a formal legally binding agreement it is a formal legally binding agreement between the partners of an LLP between the partners of an LLP which defines the तीनटा जिनस कीवर्ड्स एडा हमरो हैला कौन कौन से कहिछि देखो एलएलपी एग्रीमेंट अंडर रे which defines the rights responsibilities and duties rights कार केति की राइट अछि responsibilities के केति की responsibilities हैंडल करिवो rights responsibilities and duties of members माने के पार्टनर्स हमर हैला एथरे से कोन लॉ लैंग्वेज रे दैछि से मेंबर्स हले ऑफ मेंबर्स and also the different set of rules for running the business ता तळे लेख एडी एडी ए तळे हैला in the absence of an LLP agreement all the rights and liabilities in the absence of LLP agreement all the rights and liabilities provided in schedule 1 of the act shall apply
शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई खाली से शेड्यूल 1 टा मन रखले स्टेटमेंट लिखि दे पारे एलएलपी एग्रीमेंट अच्छे कहले सेटा जिंदी होतला सिंदी हबो जदि एलएलपी एग्रीमेंट टा फ्रेम आगा करना तो कोडा यूज करिए से माने शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट माने को एक्ट एलएलपी एक्ट बुझिला तापरे एलएलपी एग्रीमेंट तळगु आस the filing of an LLP agreement the filing of LLP agreement the filing of LLP agreement is mandatory while is mandatory while registering the firm within is mandatory while registering the firm within 30 days of formation of LLP within 30 days of formation of LLP कागु फाइल करिवे ऑब्वियसली रजिस्टर ऑफ कंपनीज बुझिला लेख नेक्स्ट हेडिंग दबा माड खाया बुझिला ना दिजन जो बाड़ीती जान लिखी दी से पॉइंट एडी कोन पेन रे लिखले लिभियो ने लिखी दी को हां पानी पकेले लिभियो मो मुह पर पके दियो पानी हां पूरा रागिले मते फर्स्ट जिनस कौन हबो बस जान तो खतरनाक वे ताली मारची आवडे पॉइंट ना लिखि देगी 4 मार्क पे आसले लिखि देबो एलएलपी एक्ट अंडर रे हला अमेंडमेंट 30 चेंजेस लिखि देबो हला 29 नै कि मते रागिले कोन हस लागे वेरी गुड कितनी तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में हेडिंग दियो फॉरेन एलएलपी फॉरेन एलएलपी माने कौन रे फॉरेन रे जोड़ा थियो एतिक जिनस आपण पढ़ौछन हमें पढ़छु आ ना आपण पढ़े लाज अछि ना हम पढ़े लाज अछि नाइ रे आज्ञा हेडिंग दियो नै फॉरेन एलएलपी विषय क्वेश्चन आसुछि फॉरेन एलएलपी रो क्वेश्चन ला देखो आरटीपी 2017 रे थिला हला स्कैनर रे मध्य देइछि बट चांसेस अछि आइ देबा पय एग्जाम रे से पचारनी बिट क्वेश्चंस रे पचाछि गुड्डी थरे तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ना आसी परबो तो आमे फोकस करिया आ ऊपर इंस्टीट्यूट रो बहुत भला आदत गोटे अछि आवर डिवाइन इंस्टीट्यूट इज वेरी मच हैबिचुएटेड टू आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट इन द टेक्स्ट बुक बिल्कुल भी ता विषय किछि भी नथिबो से जिनस पचारिया जिमदी की गोटे नुआ बहु को जे नुआ बाहाई पळा आस्थिबो ना 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 बेसर नाही नुआ बाहाई जे आस्थियो ताको समस्त विषय इंट्रोडक्शन देबे कि तू आकु इंदी पचारो सिंदी कथाओ आउ से माने आसी नथिए गोटे नुआ लोकडे पळा आसियो जे कि बहुत डिमांडिंग थिबो आ से पूरा उल्टा रागी जियो कि माने मु आसी कहि कि तू कि एक्सपेक्ट करलनु मु तो अज्जार कक्कार पुओ हला एले तू मते चिन्नी पारलन बड़ा बेइज्जती हो गया तो आम इंस्टीट्यूट रो बुद्धि मु गोटे लाइन रे कहया चाहूची
से जो जिनसटा टेक्स्ट बुक रे नथिबो कि से जिनस किछि भी गोटे सेंटेंस नथियो सिंधी जिनस पचारिबो तो आमे वेरी केयरफुल रहर अछि आरटीपी एमटीपी एंड वर्कबुक को धरिग्रे बुझिला तबे लेखो फॉर एन एलएलपी it is a business structure it is a business structure it is a business structure that is registered in one country that is registered in one country that is registered in one country and operates in another and operates in another and operates in another. Second point lekho 2 points are enough jodi foreign LLP bisare pacharichi 2 to 3 marks pacharibo to foreign LLP is a legal entity foreign LLP is a legal entity foreign LLP is a legal entity that combines aspects of corporation and a partnership corporation and a partnership corporation and a partnership corporation and a partnership and offer limited liability to partners and offer limited liability to partners limited liability to partners and offer limited liability to partners. Clear? कौन है Shark Tank? बुझिला आरटीपी 2017 क्वेश्चन 2 मार्क्स पे पचाछि जदि पचारले एतिकी लिखिदम हैला then comes the very important question explain the extent of the liability of the limited liability partnership under section 26 of the LLP act बुझिला माने से कहूची आमे तो गुटे जिंस पढलो फीचर्स रे कि पार्टनर्स रो लायबिलिटी जहां भी अछि दैट इज लिमिटेड तांको सब जिंस बिक्की गिरी जाईगी तांको लायबिलिटी क्लियर करिया दरकार नै तो से पचाछि केते जे लिमिटेड बुझिला ना सेडे से पचाछि 4 मार्क्स पई 2015 जून स्कैनर क्वेश्चन तो हेडिंग दियो extent of liability of extent of liability of extent of liability of limited liability partnership limited liability partnership under section 26 of the LLP Act under section 26 of the LLP Act under section 26 of the LLP Act. फोर पॉइंट्स अच्छे यार ब्रेक डाउन करो 4 पॉइंट्स को हला कंपलसरीली 4 लिखिबार अच्छी बट इजी वर्ड्स रे मो लिखेबी फर्स्ट पॉइंट लेखा a LLP is not bound by. A LLP is
not bound by, not bound by a partner, a partner, a partner in a dealing, a partner in a dealing, a partner in a dealing with a person, with a person, if रे we have two other points है ला एमती खाली कर दियो directly if partner has no authority, partner has no authority to act for the firm, to act for the firm, to act for the firm or do a particular act, or do a particular act. बुझला एडा होचे फर्स्ट पॉइंट. Second लेखा, if the person knows that he has no authority, knows that he has no authority, person knows that he has no authority or does not know, or does not know, or does not know or believe, does not know or believe him to be a partner, him to be a partner. एडर मीनिंग मु बुझेबी लास्ट को फर्स्ट से चार पॉइंट गुडा को लिखि दे हैला. सेकंड रे लेखा, not liable to any person, not liable to, not liable to any person, not liable to any person who is responsible for a result, responsible for a result obtained by wrongful act, obtained by wrongful act, obtained by wrongful act or omission, wrongful act or omission on his part in the course of business, on his part in the course of business, on his part in the course of business. Third point लिखो, obligation arising in the contract, obligation arising in the contract shall be solely the obligation of LLP, shall be solely the obligation of LLP, solely the obligation of LLP. Fourth and most important point is the liabilities of the firm shall be met out or paid off
only through the properties, only through the properties, only through the properties of the LLP, only through the properties of the LLP. लेखुच लेख लिखि सार जदि माने फर्स्ट पॉइंट जहाँ भी अच्छी जदि तुम से एति कॉम्प्लिकेट करिया चाहुन कि सिंपल वर्ड से जदि लेखियार अच्छी कहले सेटा तो इंस्टीट्यूट लैंग्वेज टा मु जिनस लिखि देली हैला ता तळे पॉइंट टा लिखि पारो इंस्टेड ऑफ दैट मते लाउची ए पॉइंट टा टिके भल लागियो तो तळे डायरेक्टली लिखि दियोगी LLP is not bound by पानी पियो LLP is not bound by anything, not bound by anything done by a partner, anything done by a partner in dealing with a person, 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 if the person knows that he has knows that the partner has no authority, the partner has no authority to be a partner of the LLP. दीटा स्टेटमेंट कंबाइन करके पॉइंट रे मु लिखि देली हैला अलग अलग करके लिखिया दरकार नहीं दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग हैला फर्स्ट पॉइंट टा तो भूली जिबार चांसेस बेसी अधिक अच्छी दैट्स व्हाई मु इंदे लिखेली तो से 3 to 4 मार्क्स में पचार तो डायरेक्टली एटा लिखि पारि जदि से 7 मार्क्स में पचार तो मु कहि न थांदी कि गुटे स्टेटमेंट रे लेख कहि तो बुझौची ध्यान से सुनो कौन कहूची फर्स्ट थिंग से कहूची कि एलएलपी रो जहाँ भी लायबिलिटी अच्छी एलएलपी रो जहाँ भी लायबिलिटी अच्छी तार एक्सटेंट कौन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु लिखि दउची एटा 2015 जून रे आस्थिला 3 मार्क्स पे एमटीपी 2017 4 मार्क्स पे आरटीपी 2020 5 मार्क्स पे डायरेक्ट 3 4 5 हमर अछि हैला दैट्स इट आउ केबे तो आसीनी आउ केबे आसीनी हैला तो चांसेस अच्छी बहुत केबे पचारे तो पचारिबो इजी क्वेश्चन ने देखो एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो लायबिलिटी टा केते जे अछि सेटा हमें जानबा चारटा पॉइंट से कहिजी लास्ट मु पढोची देखो इजी पॉइंट्स रु फर्स्ट द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म शैल बी पेड ऑफ ओनली थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म माने जहाँ भी एलएलपी जहाँ भी अच्छी एलएलपी फर्म रो जदी एडा बैलेंस शीट तो एडी कोन रहय हमर लायबिलिटीज एडी कोन रहबो एसेट्स तो लायबिलिटीज जहाँ भी अच्छी एक्स अमाउंट रो एसेट्स थ्रू रे आगा क्लियर हेई पारिबो हैला एसेट्स थ्रू रे आगा क्लियर हेई पारिबो पार्टनर्स के एले तांको निज पैसा रगिया दरकार नै वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एलएलपी जहाँ भी प्रॉपर्टीज किनिछि ता थ्रू रे आगा एलएलपी रो कोन लायबिलिटी गुडा को क्लियर हेई पारिबो आई होप इट्स क्लियर फॉर टू एवरीवन हैला
एटा रहला फर्स्ट पॉइंट तापरे ऑब्लिगेशंस अराइजिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सोली द ऑब्लिगेशंस ऑफ एलएलपी बुझिला ना माने एलएलपी पार्टनरशिप रे कोन पांचटा पार्टनर अछंती से माने गोटे कॉन्ट्रैक्ट करिसंती गोटे कोन ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी सहित कोन कि आमे 5 लाख रुपीस दे दबो तमे कोन आम पय एते एते काम कर दबो किबा कोन से माने 5 लाख रुपीस उधार अछंती कि जहां भी कॉन्ट्रैक्ट हिसाब रे तांको के माने बाकी अछंती तो सी एलएलपी फर्म को पैसा पचारियो ना कि जन जन जाई पार्टनर्स को कॉल करिकि से धमके पारिबनी कंपनी किबा पार्टनर्स को कॉल करिकि बाध्य करि पारियोनी कि तमे पेमेंट करनी से का थ्रू रे पाइबो सेडा खाली एलएलपी थ्रू रे पाइबो माने से कंपनी तरफ रो पैसा जीवो तो ए पॉइंट को ए पॉइंट लिंक होउची ना ना हमरो होउची क्लियरली लिंक होउची कोन पे होउची ना पैसा जहां भी दबो सेडा एलएलपी माने ना रे जहां भी प्रॉपर्टी किना आइची से प्रॉपर्टी खाली बिकी गया मैं दे पार को एल पार्टनर को आमे बाध्य करिकि पचारि पारियन एडा होउची कोन हमरो सेकंड पॉइंट देन से कहूची देखो एडा ले तमे सिंपली लिखि पारिबो मु से लॉ लैंग्वेज टा लिखेली बे तळे तार येडा लेखौची इन जनरल मु लिखि दोची देखो एडी इन जनरल the partners in an LLP the partners in an LLP the partners in an LLP are not liable in case of तीनटा की पॉइंट से कहछि fraud negligence and unauthorized acts तीनटा केस रे कोन पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल हैला जदी का द्वारा फ्रॉड हिची किबा के किछि ओमिट कर देछि हैला ओमिट कर देछि माने कोन नेग्लिजेंट हे जेछि देखिनि से बाय मिस्टेक सेला छाड़ देछि किबा अनऑथराइज्ड एक्ट्स माने कोन जहां भी लॉ मना करिछ ए रॉन्गफुल एक्ट जो लेखिनि मेडी एडा होछि कोन एडी अनऑथराइज्ड बुझिला नेग्लिजेंस होछि कोन हमरो ओमिशन रो अदर वर्ड तो सिंपल वर्ड से जदी लेखियार अछि कहले पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी आर नॉट लायबल इन केस ऑफ फ्रॉड नेग्लिजेंस एंड अनऑथराइज्ड एक्ट्स का द्वारा जदी फ्रॉड हैला का अलगा द्वारा ऑब्वियसली पार्टनर्स जदी भूल करछन तो सेमानो पचारिए सेटा कंट्रावेंशन रे हमें पडिबा बट आउ किए किछि भूल करछि आउ का लागि तीनटा जिंस हेछि फ्रॉड अनऑथराइज्ड एक्ट्स and कोन नेग्लिजेंस हेछि एले पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन बुझिनी जदी पचरी पारियो ओके फाइन देखो फर्स्ट पॉइंट है LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if the person knows that the partner has no authority to be a partner of the LLP बुझिला ना तो से कौन कहूची गोटे पार्टनर अच्छी सी कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं आम गोटे जिनस पढ़लु मिनिमम 2 पार्टनर्स कौन रहार अच्छी डेजिग्नेटेड रहार अच्छी आ गोटे रेसिडेंट पार्टनर रहार अच्छी एतिकी जिनस आम जानचु तो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं माने जणे जे डील करছে आ जणे पर्सन सहित ध्यान से सुनो आ जणे पर्सन सहित जे डील करछि से पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट डेजिग्नेटेड से काम करिया पे से डेजिग्नेटेड नो हां बट कोन हेची से अलगा पर्सन जे भी अछि से जानिछि कि ए पर्सन कोन किछि भी तार अथॉरिटी नै से फर्म हिसाब रे काम करियो किछि अथॉरिटी नै खाली रखिजन तो रखिजन न रखिले बिजर करियो कहि रखि देइजन हैला ए हिसाब रे रखिजन तो जानी कि जदि से किछि एंटर करछि कि कॉन्ट्रैक्ट करछि कि डील करछि तो एलएलपी फर्म डा ताको केबे हेले रिस्पांसिबल हबनी मो कथाटा बुझला ना ओथरे बुझेबी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट बट इजी पॉइंट बुझला नेले पचरियो तुम तीन जण बुझला ना ओथरे कोई Okay, fine. I am repeating. So now, LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person. If the person knows that the partner has no authority to be a partner of the LLP.
हेले एडी कोन गोटे डेजिग्नेटेड पार्टनर रो रोल पळा आछि डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जे थिबे तांको पाखरे आगा राइट थिबो किछि जिंसो करिबा पई हेले जो पर्सन आसो तो डील करछि सी ऑलरेडी जानिछि कि ए पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट द डेजिग्नेटेड पार्टनर जदि तांको भितरे हेले से डील करछि तो तांको भितरे जदि किछि भूल भाल हैला तो से जाईगी लायबिलिटी ऑफ द फर्म को बेले कोन क्लेम करि परियनी फर्म रो एलएलपी फर्म को जाईगी क्लेम करि परियनी कोन पे करि परियनी ना से पर्सन जेहेतु जानिछि कि दिस पर्सन हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द फर्म और डू द पर्टिकुलर एक्ट हैला एंड मु दीडा जिंस लिखि जे देखो नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द फर्म और डू अ पर्टिकुलर एक्ट हैला तो एडीएल ऐड करि पारे नो अथॉरिटी टू बी अ पार्टनर और एक्ट और डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट और डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट सूरज बुझले एबे ना उतर बुझी ओके फाइन थैंक यू तो एबे देखिए गोटे क्वेश्चन 5 मार्क्स रो 2016 अच्छा आउथरे बुझी दी फाइन ठीक अच्छे देखो LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if the person knows that the partner has no authority to be a partner or do a particular act of the LLP firm तो गोटे पर्सन जानिछि माने गोटे सान पिलाडी अछि हैला से सान पिलाडी बहुत कांदुछि से कहउछि कि मते केले पचार नांदी मते के किछि डील करिया को दो नांदी तमे कोन कहयो कि ताको टिके आसी खालटी पचार दियो हैला से कोन कहली आ बेसी भाबियोनी आ मो आसी परे पचारिया तो से पर्सन जानिछि हैला से पर्सन जानछि तो से कहला मु जतळो ताको कहिली कि 100 डाण धरताले कहले से मना करला तो मु एबे से पिल्ला ऊपर केस करी आ पिल्लार फैमिली ऊपर मु केस करी कहले हबो कि नाही ऑब्वियसली हबोनी काहेंगी से पर्सन जानछि कि से पिल्लार सेति कि अथॉरिटी नाही से काम करिया पई किंबा से फैमिली तरफ रे एक्ट करिया पई इन द सेम वे जतळो गोटे पर्सन जानछि कि से डेजिग्नेटेड पार्टनर नाही हैला से डेजिग्नेटेड पार्टनर नाही आ से ता कामडा करि परिबोनी खाली ताको अपॉइंट करा आइछि से टेम्परेरीली से कामडा करिया पई तो से जाईगी केबेले एलएलपी फर्म को सेटा क्लेम करि परियन काहेंगी जस्ट बिकॉज़ ही नोस दैट ही इज नॉट द डेजिग्नेटेड पार्टनर दीपी बुझला एबे ना आथरे कहबी ओके फाइन ठीक अछि गोटे 5 मार्क्स क्वेश्चन अछि 2016 जून रे से बारंबार पछछि दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर बॉडी कॉर्पोरेट बारंबार इन द सेंस कोन आरटीपी एमटीपी रे पछछि दि तीन थरे एंड डायरेक्ट स्कैनर क्वेश्चन रे से खाली 2016 रे पछछि हला तो लेखा एलएलपी एलएलपी आर LLPs are body corporates explain LLPs are body corporates explain LLPs are body corporates explain से 5 मार्क्स पे तीनटा पॉइंट देछि इंस्टीट्यूट मात्र तमे तीनटा पॉइंट देले लिखले केबेले से मार्क दबन तमे और गोटे पॉइंट एक्स्ट्रा का लिखियो कहियो से ना कम लिखियो कहन अच्छा एलएलपी एक्ट आगरो के पढिचो रिप्लाई करो एलएलपी एक्ट जदि के टी पढछो कोन करछो नहीं फाइन ठीक अच्छे देख LLPs आर बॉडी कॉर्पोरेट्स तो LLP को हमें बॉडी कॉर्पोरेट कहिबा पई वी हैव सर्टेन पॉइंट्स किछि पॉइंट्स अछि जोडा को धरि हमें कोन LLP को बॉडी कॉर्पोरेट कहि परिबा हैला तो आम पाखरे अछि 7 पॉइंट्स अछि आम पाखरे तमको जेति की इच्छा सेति के लिखि पारि सानो सानो पॉइंट 7 हैला सानोडा पॉइंट्स कोन अछि एरे एरे खस छि कोन पेडा
पेन सरनी खसुची इट्स ऑयली ऑयली फर्स्ट पॉइंट लेख तार फर्स्ट नेचर होची सेपरेट लीगल एंटिटी separate legal entity from its partners second point is an llp continues to exist even if its partners change partners are only liable for their agreed contribution to LLP and not for the actions of other partners Students, कोड क्लियर नहीं कौच को पॉइंट an LLP can acquire को क्वेश्चन ना an LLP can acquire hold and dispose property okay ओ क्वेश्चन क्लियर दुसुनी पचारच dispose property in its own name ओके फाइन अच्छा दुसुनी कहथिला हाँ ठीक अच्छे मु वंस लिखि देला परे आई विल जूम आउट तो सो दैट यू कैन नोट डाउन हला फर्स्ट मु लिखि दियो तो फिफ्थ पॉइंट इज an LLP can enter into contracts then sixth point is an LLP is a separate taxable entity last and important point is LLP is treated as a body corporate for the purpose of GST Act को पॉइंट बुझा पड़नी पचारि पारियो एबे लेख भल से नोट डाउन करो फर्स्ट
जदि भलसे एबे जाई पढ़िच तो मते गोटे डाउट पचारिया कथा तुम माने न पचारे मु लास्ट मुआ कहि बट को डाउटटा सेटा कहि पारियो हम्म लिखिलो समस्ते नोट डाउन करलो वेरी गुड टैक्सेबल एंटिटी बस टैक्सेबल एंटिटी किंदी हैला जेतळो से कहउथिला कि एलएलपी इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट तो एलएलपी एक्ट टैक्सेबल एंटिटी किंदी हैला तो द आंसर इज तार अमेंडमेंट आछे बे से कहउची फ्लैट 30% रे एलएलपी इज गेटिंग टैक्स्ड हैला जहां भी हमर रिसेंट अमेंडमेंट आछी यार को कोन होउची एते रागिले भलो कि मने पड़छ समस्त को लैपटॉप केबे केबे गोटे हस्बैंड रो वाइफ दे थाउछ ना लिटरली लेखा तळे द इनकम ऑफ एलएलपी the income of LLP the income of LLP the income of LLP which is LLP by income कौन जे which is receipt of remuneration or interest which is receipts of remuneration or interest is taxed as business income in the hands of LLP partners the income is taxed at the rate flat 30% plus surcharge and cess as applicable is it clear बुझिला समस्त को हैला किछि डाउट अछि पचारि पारियो कहीं सांगे सांगे मन रखी दियो अगेन ए जिनस टाइम वेस्ट करिया दरकार नहीं जेहेतु आमे खाली एग्जाम ओरिएंटेड पढुछु तो सांगे सांगे ट्राई कर मन रखिया पई जदि किछि डाउट अछि पचार क्लास टा देखिबो लेक्चर टा देखिबो सरेबो बसिकी आउथरे पढिबो दैट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट एग्जाम बेसी दिन नहीं इट्स ऑलरेडी 28 टुडे बुझिला तो तुमको जेहेतु सी 4 कि 5 मार्क्स पे पचारची तो तुमने कौन करि पारियो 7 पॉइंट्स मु देची जोड़ा इच्छा सेडा लिखि पारिबो हैला 4 to 5 पॉइंट्स लिखि पारियो जोड़ा तुमको मन पड़ला से खाली 3 पॉइंट्स देची तो सेडा एते खास नहीं तो एलएलपी रो जहाँ भी अच्छी मोर होमवर्क एतिकी रहियो कि प्लीज ओवरलुक द चैप्टर आज जीवो चैप्टर टा टोटली ओवरलुक करिवो तुमको जो जिनसडा पर्सपेक्टिव टा लागुची कि मते एडा पढिबा दरकार एग्जाम पे बुझिला मु तो कहूची खाली एग्जाम पर्सपेक्टिव रो मना नहीं
बट तुमको जो जिनस लाଗୁଛି कि मते एटा पढ़िया दरकार कि मते जिनसटा बुझा पड़नी तो काली आसिकी सांगे सांगे क्लास रे एड्रेस करि परियो बिकॉज़ वी डोंट हैव टाइम तो पचारि पारिबो हैला अपार्ट फ्रॉम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तुमको जहाँ भी डाउट अच्छे आम सेटा माने डिस्कस करबा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जाम रे ना को एग्जाम रे कंपनीज एक्ट रो छाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन लेख सेक्शन 13 ऑफ द एलएलपी एडारो 8 मार्क्स क्वेश्चन आसुची डायरेक्ट क्वेश्चन एंड केस लॉ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एंड केस लॉ क्वेश्चन अच्छा मते गोटे जिनस कहलो तुमको टॉपिक्स कौन एपटे सेपटे लाइक कंफ्यूजन से टाइप ची लागुची हाँ ना नाइ ना कौन नाइ ना each thing is individual तो मु पढुची किछि कंफ्यूजन लागुची कि heading दियो section 13 of the LLP Act okay fine thank you section 13 of the LLP Act तो एडारु कौन कौन बिट क्वेश्चंस आछि एंड 8 मार्क्स क्वेश्चंस आछि एडारु हमको आज जे 4 मार्क्स जहाँ भी हमरो बिट क्वेश्चंस पचारछि से जदि पचारले हैला 2 to 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आसुछि एंड तुमको डायरेक्टली 8 मार्क्स क्वेश्चन पचारछि जोडा कि केस लॉ क्वेश्चन हे पारियो नले शॉर्ट नोट क्वेश्चन भी हे पारियो डायरेक्टली हैला एंड जिनस होउछि तमे जदि एडा बुझि जाउछु तो केस लॉ क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व करि पारियो केस लॉ क्वेश्चन ना आस्थिला हमरो 2018 डिसेंबर डायरेक्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स रो सेतरे से पचारछि कि LLP wants to shift its registered office from Mumbai in the state of Maharashtra to Kolkata in the state of West Bengal. What is the procedure the corporate has to follow under the Limited Liability Partnership Act 2008? ठीक अछि आमे ता हिसाब रे आंसर लिखि के तापरे केस ला क्वेश्चन ना देखि क्लियर ध्यान दियो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे तो आराम से ध्यान दियो फर्स्ट लिखो every LLP must have a registered office. Every LLP must have a registered office. Every LLP must have a registered office where all communications and notices are received. Where all communications and notices are received. ये जो कम्युनिकेशंस जहाँ भी रिसीव होची तार तीनटा मेथड से प्रेस्क्राइब करछि एक्ट हमगु किमती किमती रिसीव हे पारिबो द फर्स्ट थिंग इज रजिस्टर्ड पोस्ट ए जे सब बिट क्वेश्चन जगह हमरो रजिस्टर्ड पोस्ट सेकंड थिंग इज सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग then directly at registered office हैला तापर लेख एडा होचे हमर बिट क्वेश्चंस रे जहा पचारछि मु एमति लिखै देली नेक्स्ट गोटे बिट क्वेश्चन रे पचारछि कि एलएलपी जदि एडा कंप्लाई करूनी माने रजिस्टर्ड ऑफिस रखुनी त ताको केते पेनल्टी पड़िबो केते पेनल्टी पकिया तमाने को केते 100 कोटी पके देना नहीं केते केते हेथियो मत दबो ना कौन से पैसा 50,000 penalty for non compliance of section 13 केते लिखैला सिए बस 50,000
बुझला समस्त को कौन है मामा लेखो चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस हेडिंग दियो चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस कौन हाँ एडा है सॉरी बोले से टॉपिक टा ना तार आगे टॉपिक टा एडा चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस देखो 8 मार्क्स क्वेश्चन आछे को कलर करिया को पर्पल फर्स्ट लेखो बॉक्सेस हबो एबे नोटिस ऑफ change notice of change of registered office notice of change of registered office का पचरी करिया हमें का पचरिया मते पचरी करिया ना कोन कागो आरओसी कितने दिन भितरे within 15 days within 15 days sorry within 30 days within 30 days in form 15 within 30 days in form 15 हैला फर्स्ट आरओसी को कयो तो जहाँ भी चेंज अच्छी change can be done change can be done change can be done as provided in partnership agreement partnership agreement partnership agreement hello partnership agreement in case no partnership agreement in case no partnership agreement and the change एथरो टू टाइप्स अच्छी है फर्स्ट थिंग होची सेम स्टेट सेकेंड थिंग होची डिफरेंट स्टेट्स तो सेम स्टेट एले कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड consent of all partners is required consent of all partners is required एडी कोन consent of all partners plus secured creditors is required कहीं प्लेस जेहेतु चेंज होची तो क्रेडिटर मान को पचारिक आम कौन चेंज करार अच्छी ना कौन लगे जे आम भागा दौड़ होगापी चेंज कर देचु कह है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस सिक्योर क्रेडिटर्स इज रिक्वायर्ड बुझला कौन है एतिकी बुझला फर्स्ट थिंग तो से फॉर्म रे इन्फॉर्म कर दबा आरओसी को सेकंड थिंग तो जदी चेंज ता जहां भी अछि सेडा पार्टनरशिप एग्रीमेंट रे थिबार अछि हैला तांकर चेंज ता तांके आगरो माने डिसाइड करथिबे कहला का हे पारियो जदी हेनी तो ऑब्वियसली कोन पार्टनर माने डिस्कस करिकि सेडा करिवे आ जदी अलगा स्टेट को करचंदी तो कोन हबो ऑब्वियसली पार्टनर्स एंड हमर सिक्योर क्रेडिटर्स दी जन जार कोन परमिशन दा दरकार हैला तापर लेखा एडा रहला फर्स्ट पॉइंट एडा सेकंड पॉइंट एडा लास्ट पॉइंट है ना when change is from one place to another one state to another when change is
from one state to another, when change is from one state to another, a notice not less than 21 days, notice not less than 21 days before filing any notice with registrar, before filing any notice with registrar, has to be published in a daily newspaper, in a daily newspaper in the region where LLP's registered office is located. LLP's registered office is located. एतिक रहा तुम पॉइंट्स है सेटा को बहुत लंबा चौड़ा करके देची मु सिंपली सेटा को बुझेली मन रखिया बुझला ना से तुमको टोटल केतरा 8टा पॉइंट देची 8टा पॉइंट को मु 3टा पॉइंट को आन देली सेटा कंप्राइज करिकरी एथे से कहूची कि जदी से कंप्लाई करूनी तो पेनल्टी पड़िबा हमरो 2000 रुपीस रो नेगिरी 25000 पर्यंत हैला बिट क्वेश्चन रे आसिला आसी परिबो सेक्शन नंबर 13 आगा ना सेक्शन 13 रे से कहूची जदि ए जिनसटा काओ न कहूची कि न्यूज़पेपर रे पब्लिश करनी कि जहा ले करची तो से केस रे कोन हबा हमरो से केस रे हमर पेनल्टी पड़ जिवो 2000 रो 25000 पर्यंत तो सिंपली कहि दोछि देखो जदि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करर अछि तो फॉर्म 15 रे से फाइल करबो आरओसी को विद इन 30 डेज से चेंज ता कोन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रे प्रिस्क्राइब हेगी थिबार अछि जदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रे प्रिस्क्राइब हेगी नै तो कोन करर अछि पार्टनर्स माने एग्री करियर अछि जदि अलग स्टेट को जदि हमें चेंज हे जोचो तो कोन हे पारिबो ना पार्टनर्स आउ सिक्योर क्रेडिटर्स तीजन जार परमिशन दरकार आउ जदि एडा होची तापरे कोन ना हमें आरओसी को नोटिस देबा 21 डेज भितरे हमें न्यूज़पेपर रे पब्लिश करके समस्त को जणे अछि कि हमें चेंज करछु कहिरी हैला आरओसी को देला परे नै आरओसी को देबा 21 डेज आगरे से कोन न्यूज़पेपर रे पब्लिश करे अछि अच्छा को न्यूज़पेपर तुम रजिस्टर्ड ऑफिस को रीजन रे अछि माने तुम बरहमपुर जदी कोलकाता शिफ्ट होउछ तो बरहमपुर रे सर्कुलेट हेइथिबा न्यूज़पेपर रे तुम फर्स्ट कयर अछि कि हमें शिफ्ट होउछ कहिरी के दिन भितर ना 21 डेज बिफोर गिविंग द नोटिस टू द रजिस्ट्रार बुझला दैट्स इट एतिकी जिंस रेलेवेंट मेंशन करबा पे ठीक अछि बाकी थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू बाकी थिंग्स